Have you ever wondered how to express some of the beautiful expressions of Hindi language in the English language with the same intensity? So here it is. First one I am taking that is गुनगुनी धूप. अभी सर्दियों का मौसम है और हम इस एक्सप्रेशन को बहुत यूज़ करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में. तो चलिए अब बताइए इस गुनगुनी धूप को हम कैसे बता सकते हैं इंग्लिश में, या इससे हम किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं. गुनगुनी धूप को आप कहिए जेंटल सनशाइन और वार्म sunlight. And to express its cozy and comforting feel, you might say, I'm basking in the warm winter sun. Or another way to say it is, I'm enjoying gentle warmth of the sun. नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज़ गुलाबी सर्दी. इसको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पिंक विंटर्स. नो, इट इज़ माइल्ड विंटर चिल or pleasant winter breeze. It refers to lovely and refreshing winter weather that is not too cold and feels delightful. Now, how to use this expression gulabi sardi or pleasant winter chill or mild winter breeze in sentences? So, here are few of the examples. You could say, the mild winter breeze makes our morning so refreshing. Another example is, this pleasant winter chill seems to be inviting me for a nature walk. So that's it in this video. Stay healthy, keep learning, follow my channel. Bye bye.